You can also import multiple images in the same page. File, place embedded, go to some other image, place it, and then press enter. Okay. I also told you about layers. Like in this page, we have a background layer, which is in white color, and then we have two images here, right? To move the images from one place to another place, you should take move tool from here, and then make sure that auto select layer is on, and then you can just simply drag the image from one place to another place. To scale the image, what I said, scale the to उसको छोटा बड़ा करने के लिए क्या बोला था, कोई बताओ? Sir, Control plus R. No, Control R was for T. yes, Control R was for ruler to check the page size, and Control T is to transform. Okay, and once you press Control T, you will be able to see this bounding boxes around the image. You have to drag it diagonally from corner to make it smaller and bigger. Okay, and then you have to press enter to fix the image in the page. Okay, to rotate करने के लिए क्या बोला था? So Control T, then wait for the icon to show and then start rotating. Yes. To rotate, you have to go in the corner and wait for this rotate symbol, and then you can rotate it from left to right. And what if I have to rotate it in particular angle, like 45 degree? What I should do? Anyone? So press this key. Right, Yeah. sir. No, you have to press shift and then rotate it. It will stop at every 15 degree. Okay, you can rotate it clockwise or anti-clockwise. Okay. Okay, and then once the angle is fixed, you should press enter to fix the image in the page, right? Okay. Today I'm going to move to the next tool, which is selection tool. Okay, if you will press it for longer time, you will be able to see 4 different options. Try it in your system. The second tool is Marquee Tool. This is basically to select the area, which area you want to work on. And if you'll press it for a longer time, you will see 4 options like this. Okay. Okay, so what is the use of selection tool? Suppose if you have to crop this image from top, what I'll do, I'll select the area which I have to crop. So for that, first make sure that particular layer is selected, image is selected, and then take this selection tool and draw the area which you want to delete. Like this, I have selected this area, this rectangular area. Once it is selected, you will be able to see these moving lines around this selection, and then press delete in the keyboard. Okay. ठीक है, यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने की चीज है, कभी कभी हम sometimes when we import images from internet, you have to see in the layer, if you see a small rectangle like this here, if you can zoom it and see where I'm showing it, if you can see a small rectangle piece kind of thing here, what you have to do is to select the particular layer, right click on it, and convert to smart sorry, which one it is, rasterized layer. Remember it, because sometimes when you import any image from internet, it doesn't have editable capacity. For that, you have to convert those images, you have to rasterize those layers. Okay, so once you will right click and do rasterize, the small rectangle will go from here. Okay, right click on this layer, rasterize,
that particular small icon is gone. Then you will be able to freely edit this image. Okay, किसी का ऐसा आ रहा था? This was very important. Okay, मैं undo करके फिर से दिखाता हूँ. See here, अगर यहाँ पे zoom करके देख सकते हो तो यहाँ corner पे एक छोटा सा एक icon बना हुआ है. ठीक है? That means if I'll try to delete this area of this image, I'll press delete. Could not complete your request because the smart object is not directly editable. ठीक है? It is not editable. So to make it editable, what we have to do is right click on this particular layer and then do rasterize. If you want, you can take a screenshot of this one. कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो कि इमेज एडिट नहीं हो रहा है, then you have to do the rasterize layer. लेयर में किसी को प्रॉब्लम था? Yes. समझ में आ गया रास्टराइज करने के लिए? ठीक है, अब मैं सिलेक्शन टूल को फिर से बताता हूँ. द सेकंड टूल इज सिलेक्शन टूल. So selection में there are 4 options. First I'll take the first tool which is rectangular marquee tool. I will select the particular area कि इतना एरिया पे हमें काम करना है. ठीक है, और we will also select the right layer. इस फोटोग्राफ में हमें एडिट करना है, right? Then you have to select this particular layer. Okay, and then try to delete it. It will get deleted. To deselect it, you have to press Ctrl D in the system. क्लियर है? मैं फिर से अंडू करके दिखाता हूँ. ठीक है, सपोज कि इस एरिया में से, इस इमेज में से हमें कोई एरिया को डिलीट करना है. देन आई गो टू द सेकंड टूल व्हिच इज रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल and I'll select the area which I want to delete. This time I'm just taking the inner areas. Okay, I have selected this area and then I'm going to press delete in the keyboard. What will happen? This area will get deleted. To deselect it now, after deleting it also, you will see this selection line is still there. Okay, to remove this selection area, you have to press Ctrl D in the keyboard. Try it. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर आपने जो बताया था फोटो पे क्लिक करके लेयर को रेस्टराइज करने के लिए, तो वहां पे राइट क्लिक करने के बाद वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है. नहीं, you have to select the move tool first. ठीक है, first tool is move tool in the toolbar. This is toolbar. Okay, first tool is move tool. Okay, once you select this move tool, you have to click this auto select icon. ठीक है, यहाँ पे टिक होना चाहिए. ठीक है, this area में यस सर. अगर ये क्लिक है तो whatever image you will click, that layer will automatically get selected. ठीक है, ट्राई करके देखो.
ठीक है, तो to select area you have to select the marquee tool, rectangular marquee tool, and drag the area which you want to select. Okay, and to deselect it you have to press Ctrl D in the keyboard. It will get deselected. Ctrl D करके देख लो एक बार. हो रहा है सबसे? Yes. ठीक है. अब selection में भी there are so many options. Suppose I have taken this marquee selection tool, rectangular marquee selection tool, and I have selected sub area. Okay, if I have to add some more area in the selection, what I will do is go on top. You will see 4 icons here. Okay, first one is direct selection, new selection. Okay, second one is add to selection. Click on this second icon. This is add to selection. If you want to add some more area in this selection, drag like this from inside. It will add the area like this. Okay, the third one is to, if you move the cursor here, you the shortcut, the detail will be written here. Subtract from selection. Suppose you want to subtract some area from this selection, so you have to drag it from outside and you can subtract it. Try करके देखो. So can you repeat this one? Yes. I am taking a selection tool, rectangular selection tool, and I have selected some particular area. Okay, this area I have selected. Okay, now once this tool is selected, in the menu bar you will see 4 options here: new selection, add to selection, second one is add to selection, third one is subtract from selection, and fourth one is intersect with selection. Okay, so in default position it will be in new selection. Okay, if you have to add some area in this selection area, you have to press click second option. Okay, then try to add some more area in this selection. All right, and if you have to subtract some area from this selection, you have to click the third one. Third one is subtract from selection. Okay, then you will be able to subtract some area from that selected area. What is सबसे? Yes, sir. Yes, Okay. sir. And the last one is intersect. ठीक है, ये पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा कि इस तरह का फिगर वाला में इंटरसेक्ट में क्या है, हम ऐसा कुछ एरिया ड्रैग करके ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो भी एरिया इन दोनों में सेलेक्टेड होगा, इंटरसेक्टेड होगा, that area only will get selected. See, like this. First one is normal selection. Second one is add to selection. You can add some area in the selected area. Third one is subtract from selection. And fourth one is intersected area only will be selected. Try to do these 4 options. सर एक क्वेश्चन पूछना है. बोलो. सर अगर कोई टूल अगर स्क्रीन से वहाँ रिमूव हो जाता है तो उसे वापस कैसे लाते हैं? इट विल बी इन विंडो. अगर इधर के कुछ सारे टूल्स हैं तो यहाँ पे विंडो से आ सकते हैं. विंडो में अभी तक क्लियर बताया. अगर ये जो टूल बार गायब हो गया, सपोज मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, देन यू हैव टू गो टू विंडो एंड देन यू हैव टू क्लिक टूल बार. विंडो में नहीं है,
Okay, this is a newer version. It was supposed to be in toolbar. Uh, Not this one. Search for toolbar because this is the newer version. I used to work in this previous version. Toolbar. Here, last second. Tools. Okay, window and tools. Yes, sir. Yes, sir. और राइट साइड के जितने विंडोज मिलेंगे, ये राइट साइड में जितने आइकन्स है, लेयर और प्रॉपर्टी, ये सारे एडजस्टमेंट, लाइब्रेरी, ये सारे इसमें मिलेंगे, विंडो में मिलेंगे. ठीक है. Yes, sir. तो सिलेक्शन एरिया क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ आई हैव टेकन रेक्टेंगुलर selection tool. Okay, what if I'll take elliptical marquee tool and I will try to add some area in a circle. See what will happen. It will add in circle. Okay, same thing. If you have to subtract in circle, you have to select this elliptical marquee tool and subtract. This one is subtract area, and you can subtract some area from this selected area. And same thing work for intersection, intersect with selection. ठीक है, ट्राई करो सब लोग. हो रहा है. तो इसमें जो लास्ट वन है, दैट वन इज सिंगल रो मार्क्यू. इसमें क्या होता है, एक सिंगल सा एक लाइन सेलेक्ट हो जाता है. ठीक है. तो अभी फिलहाल मैं इसे वो कर देता हूँ. आई विल डीसेलेक्ट इट. तो डीसेलेक्ट के लिए मैंने क्या बताया था, कंट्रोल डी. ओके, तो आई डू कंट्रोल डी. अगर मैं ये सिंगल रो मार्की टूल को सेलेक्ट करता हूँ और आई विल क्लिक इन दिस एरिया, व्हाट विल हैपन, try to delete it, press delete button. Okay, and then deselect. What will happen, a small thin line will get deleted here in the image. Okay, same way if you'll take last option, single column marquee tool, and click some area. I don't know, it's not working in my PC, but you have to select like this and then press delete in that keyboard. Okay, but we don't use these ones, these last two so much. Okay, so selection is basically to select the area so that we can do the editing part. We can select and delete. We can like this. We can select this area and press delete in the keyboard,
that area will get deleted, and then you can deselect it. Okay. तो zoom in के लिए क्या बताया था, कंट्रोल प्लस, zoom out के लिए कंट्रोल माइनस. कोई क्वेश्चन यहाँ तक? रेस्टराइज नहीं हो रहा है. रेस्टराइज के लिए यू हैव टू राइट क्लिक. सपोज एक और इमेज को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, फाइल, प्लेस एम्बेडेड, एंड चलो नेट से ही कोई कॉपी कर लेते हैं. ओके, इंटरनेट से कॉपी कर लेते हैं. कॉपी इमेज. फोटोशॉप में पेस्ट करने के लिए यू हैव टू गो टू एडिट एंड पेस्ट, और यू कैन प्रेस कंट्रोल V. ठीक है, छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल T बताया था मैंने. कंट्रोल T. ओके, अभी ये लेयर रास्टराइज्ड है, पर कभी कभी क्या होता है, कुछ इमेज जो होते हैं वो रास्टराइज नहीं होते हैं. सपोज कि फिर से मैं ये इमेज को खोल लेता हूँ, फाइल, प्लेस इंपोर्ट, प्लेस एम्बेडेड, and then I'll go to the same image, place it again. तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिख जाता है इस लेयर पे, और इसमें हम चाहे एडिट करना, if we'll try to edit, delete some area from it, it will show you comment of smart object is not directly editable. Okay, so first thing you have to do is to right click on this particular layer and do rasterize layer, and then try to delete it. That area will get deleted. To deselect, press Control D. Okay, see that particular area is deleted from this image. So can you Yes. see? It's not happening. Like I'm pressing the right one. Sorry. Okay, wait. There's no option. You have to right click on that layer, go to window and layer. Not in this one. Yes, right click on it. Okay, you have to Yes. right click on the text, not on the icon. You have to right click on the text, not on the icon, on the text, on the name, layer name. Yes, right click there. Yes. Then you will be able to. ठीक है, ये सब ने ध्यान देख लेना. एक छोटा सा चीज है यहाँ पे. You have to right click on the text. और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये सेकंड टूल सबको क्लियर हो गया. रेक्टेंगुलर, एलिप्स, सिंगल मार्की एंड सिंगल कॉलम. ठीक है, ये क्लियर हो गया. एक चीज ध्यान देना कि जिस इमेज, जो भी लेयर सेलेक्ट होगा, सिर्फ उसी पे वो काम करेगा. सपोज कि अगर मैंने ये पर्पल लेयर सेलेक्ट किया हुआ, ये वुल्फ वाला लेयर सेलेक्ट किया हुआ है, and if you will try to do some editing, some selection in this girl layer, I'll try to add some area. I'll try to take some ellipse and add some more area. ठीक है, ऐसे सिलेक्शन कर लिया हमने. और अगर हम चाहें कि इस एरिया में से, इस गर्ल वाले लेयर में से, अभी देखो, ध्यान देखो यहाँ पे क्या होता है. सिलेक्शन है हमारा लेयर 1, which is this wolf layer.
एंड एडिटिंग हम करना चाह रहे हैं इस गर्ल लेयर पे, ठीक है। अब हम इसे डिलीट बटन दबाते हैं तो ये डिलीट नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट बटन, तो ये डिलीट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वी हैव नॉट सेलेक्टेड द राइट लेयर। सो फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द राइट लेयर एंड देन प्रेस डिलीट, ठीक है। अब ये डिलीट हो गया। ओके सर। ठीक है। अब इसे ओवरलैपिंग कैसे करते हैं? ओवरलैपिंग के लिए हम मूव टूल लेते हैं। सबसे पहला हम मूव करने, ओवरलैप करने के लिए हमें मूव करना पड़ेगा, राइट। तो अब मल्टीपल इमेज है यहाँ पे, देन यू हैव टू, जो मैंने बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू डू दिस ऑटो सेलेक्ट लेयर एंड देन ड्रैग दिस इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ओवरलैप करने के लिए, सीक्वेंस चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था, इस लेयर में ऊपर और नीचे करते हैं, इस तरह से ड्रैग करते हैं, ठीक है। जो भी लेयर हम ऊपर चाहिए हम ऊपर करेंगे, नीचे के लिए नीचे करेंगे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ूं या फिर किसी को कुछ पूछना है? नहीं हो रहा है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के अलग अलग टूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो सपोज अगर इस गर्ल में से सिर्फ हमें ये गर्ल का आउटर लाइन चाहिए और बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड टूल पे काम करेंगे, ठीक है। थर्ड टूल इज लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल एंड मैग्नेटिक लैसो टूल, ठीक है। यहाँ पे 3 टूल है थर्ड टूल के अंदर में। इफ यू विल प्रेस इट फॉर लॉन्गर टाइम you will be able to see 3 options. First one is lasso tool, second one is polygon lasso tool और third one is magnetic lasso tool, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ lasso tool। lasso tool कैसे काम करता है? You have to move the mouse free hand, ठीक है। इस तरह से मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के ऐसे मूव कर रहा हूँ, and then from where you have to stop it exactly at the place where you have started, ठीक है। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड करना है। देन इस दिस एरिया विल गेट सेलेक्टेड, ट्राई टू डू इट। थर्ड टूल में फर्स्ट वन इज लैसो टूल। Now in lasso also we have these 4 options: add to selection, subtract to selection and intersect with selection, ठीक है। मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस से, ठीक है। सपोज कि अगर ये एरिया जो है ये एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया, हमें इसके एज टू एज सेलेक्ट करना था, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन में से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई बताएगा? Subtract, sir. राइट, तो विल डू सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैं, Subtract, sir. yes, right. So I'll select this subtract tool. Lasso tool is selected and I have taken this subtract tool. Now what I'll do is drag again, draw like this and जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड करेंगे। तो देखो ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट। ठीक है, सेम वे अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट करना है उस एरिया से, यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन पार्ट।
उसी तरह add भी वैसा ही काम करेगा. To add area, you have to take the second tool, add to selection, and then I'm going to add this area. ठीक है. Subtract करने के लिए subtract 1. Add करने के लिए you have to select the add to selection. सर Yes. सर जो एरिया रिमूव हो गया तो उसको अगर वापस लाना है तो कैसे लाएंगे? One way is to do undo, Control Z. यस ठीक है. अब आते हैं पॉलीगन लैसो टूल पे. अभी मैं क्या करता हूँ, लैसो टूल तो समझ में आ गया होगा. ओके, दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड इन 1 minute 32 seconds. मैं फिर से एक लिंक भेज दूंगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाना.